आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जदीद तारीख की इब्तदा के 250 साल बाद दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी 250 साल तारीख में कम अज कम 198 ममालिक में या तो मुदाखलत की है या फिर उनके खिलाफ जंग लड़ी है, और इन जंगों में से ज्यादातर में अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं। मगर 20वीं सदी में वियतनाम के हाथों बदतरीन शिकस्त और फिर 21वीं सदी में अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल ना करने को अमरीकी तारीख की नाकाम तरीन जंगें करार दिया जाता रहा है। और अब जिस अंदाज में अमरीका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमरीका को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अब ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, इस वजह से वो जब चाहें जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं। ताहम ईरान ने अमरीका, इजराइल और खित्ते में मौजूद ममालिक को एक बार फिर बावर करवा दिया है कि खित्ते में मौजूद कमर्शियल पोर्ट्स, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एनविडिया को भी निशाना बनाया जाएगा, और ये इसलिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। नाजरीन, 20वीं सदी के वस्त में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। इस जंग के दौरान तकरीबन 59,000 अमरीकी फौजी हलाक हुए और रोजाना अमरीका का जंग पर खर्च 50 से 80 मिलियन डॉलर आया। जबकि 10 साल से जायद जारी रहने वाली इस जंग पर कुल 138 बिलियन डॉलर लगाए गए। 2001 से 2021 तक जारी रहने वाली अफगान जंग के दौरान अमेरिका ने 20 साल तक रोजाना 300 मिलियन डॉलर खर्च किए, और इस जंग पर 20 सालों में 2.26 ट्रिलियन खर्च आया। और इस जंग में 8,000 से जायद अमरीकी, उसके इत्तेहादी और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी मारे गए। गुज़िश्ता 12 रोज से ईरान के खिलाफ अमरीका की फौजी कार्रवाई में अब तक 12 से 15 बिलियन डॉलर खर्च आ चुका है। आज भी अमरीका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा है। दूसरी जानिब ईरान की पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीकी और इजरायली हमले बंद ना हुए तो खलीज से तेल की तरसील रोक दी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंदिश के बाद आज अबनाए हुर्मुज़ में 3 कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद कार्गो जहाजों में आग लग गई और अमले को जहाज छोड़ना पड़ गया। 12 रोजा जंग में पहली बार ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खित्ते के ममालिक और मुसलमान रियासतों से अपील की है कि वो अमरीकी और इजरायली ठिकानों की निशानदही करें ताकि ईरानी हमलों की दुरुस्तगी इंश्योर की जा सके। ये अपील इस वजह से भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो हमसाय ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है, जबकि इन ममालिक का ये मानना है कि ईरान सिविल अहदाफ को निशाना बना रहा है। और ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में उन 17 अहदाफ की निशानदही कर दी है कि जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने कुवैत में मौजूद 4 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। बहरीन, कतर, उर्दन, इराक और सऊदी अरब में एक अमेरिकन हदफ को, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 अमरीकी अड्डों और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी अखबार ने इन हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी हैं कि जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी ड्रोन और मिसाइल इमारतों को तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने माली नुकसान से मुतल्लिक अखबार को बताया है कि बहरीन में वाक़े यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को अब तक होने वाले नुकसान का तखमीना 200 मिलियन डॉलर है, जबकि कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कम अज कम 6 अमरीकी ओहदेदार भी हलाक हुए हैं। अखबार ने मुख्तलिफ रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नुकसान का अंदाजा 1.5 से 2 बिलियन डॉलर लगाया है। अमेरिका को होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में ये लिखा है कि अमेरिका का ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस स्टॉकपाइल खत्म हो चुका है। ईरानी हमलों के साथ साथ इजराइल और अमेरिका ने भी तेहरान के अलावा ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी जारी रखी हुई है। अभी तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने कोई पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं की, ना ही ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खamenei का नमाज जनाजा अदा किया गया है। अलबत्ता आज तेहरान में शहीद ईरानी कमांडरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमरीकी हमलों में ईरानी आर्मी चीफ जनरल मूसवी, एडमिरल शामखानी, पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर शहीद हो गए थे। नमाज जनाजा के बाद ईरानी पुलिस चीफ अहमद रजा ने ईरानी अवाम को खबरदार किया है कि दुश्मन के कहने पर सड़कों पर आने वालों को मुजाहिरीन नहीं बल्कि दुश्मन समझा जाएगा। साथ ही पासदाराने इनकलाब ने मिसाइल हमलों की 39वीं लहर का आगाज करते हुए एक बार फिर ऐलान किया है कि अबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक भी कतरा नहीं गुजरने देंगे और हर अमरीकी और इजरायली जहाज हमारे निशाने पर होगा। अभी तक
मुश्तबा खमनई की पब्लिक अपीयरेंस ना करने के बाद अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि मुश्तबा खमनई इजराइल के इब्तदाई हमलों में जख्मी हो गए थे। ही वॉज बैडली इंजर्ड और यही वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे। हालांकि उनकी जो तकर्री है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उसको 3 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि अभी तक मुश्तबा खमनई की तरफ से ना कोई पब्लिक अपीयरेंस है, ना ही कोई पैगाम सामने आया है और हो सकता है कि इसकी वजह ये खतरा हो कि अगर वो मंजर आम पर आएंगे तो उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि उनके सामने ना आने की वजह ये भी हो सकती है कि वो इजराइल के इब्तदाई हमलों में जख्मी हुए हैं। 3 ईरानी अहम ओहदेदारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि इस हमले में मुश्तबा खमनई को टांगों समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए हैं। यही वजह है कि वो एक बहुत महफूज जगह पर मौजूद है। यहाँ अहम बात यह है कि जिस वक्त मुश्तबा खमनई का बतौर रहबर आला ऐलान किया गया तो उन्हें बाज जंग यानी कि अ वुंडेड वॉर वेटरन कहकर पुकारा जा रहा था एंड ही इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन। जबकि रॉयटर्स ने मुश्तबा खमनई को अपने वालिद से ज्यादा सगीर करार देते हुए ये लिखा है कि खमनई के सामने चैलेंजेस अपने वालिद से ज्यादा संगीन हैं। उन्हें वालिद की लेगेसी को भी आगे लेकर चलना है और फिर अपने मुल्क को इस बहरान से भी निकालना है। साथ ही उन्हें पासदाराने इनकलाब की हमायत भी अपने साथ रखनी है कि जो कि एक चैलेंज होगा, क्योंकि उनके वालिद पासदाराने इनकलाब सियासी और मजहबी इलीट के दरमियान एक ऐसा बैलेंस कायम करने में कामयाब हो गए थे कि जिसके लिए उन्हें दहाइयां लग सकती हैं। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुश्तबा खमनई से मुतल्लिक अपनी शह सुर्खी मुश्तबा खमनई ब्रिंग्स मोनार्की बैक टू ईरान में लिखा है कि पासदाराने इनकलाब ने इस्लामी जमहूरियत के लिए नए सुप्रीम लीडर को चुनकर मुल्क को फैमिली बिजनेस बना दिया है। अखबार के मुताबिक मुश्तबा खमनई ना ही अपने वालिद जितना तजर्बा रखते हैं और ना ही उनके अंदर वो सलाहियत है कि जो उनसे पहले उनके वालिद और बानी इनकलाब के अंदर थी, और उनका इंतखाब ईरानी इनकलाब के बुनियादी सतून यानी कि बादशाहत के खात्मे के बुनियादी असूलों की नफी करता है। नाज़रीन, आज ही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से फोन पर बात हुई है कि जिसमें ईरानी सदर ने यकीन दिलाया है कि ईरान का खित्ते के ममालिक से किसी भी तनाज़े में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी सदर ने यह भी कहा है कि अगर दुनिया जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देगी तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो सकते हैं। ताहम तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का यह कहना है कि चीन खलीजी रियासतों पर हमलों से मुत्तफिक नहीं, बहरान का हल जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और बातचीत की तरफ वापसी में है। जबकि आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मुशीर मुशर्रफ ज़ैदी का यह कहना है कि हर वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। मुशर्रफ ज़ैदी का यह कहना है कि फील्ड मार्शल ने सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात में दिफाई मुआहदे पर बातचीत की। हमसाये ममालिक पर ईरान के हमलों के बाद कतरी काबीना ने ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरानी हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी हमलों के खतरे पर संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं और ब्रादर ममालिक की सरजमीन पर ईरानी हमलों की भी मजम्मत करते हैं। कतर के अलावा ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ड्रोन हमले जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नाजरीन ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों से मुतल्लिक लिखा है कि इस जंग ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है कि जहां अमरीकी हमलों ने हमसाये ममालिक को ईरानी मिसाइलों की जद में ला खड़ा किया है, वहीं मशरक़ वुस्ता की मुईशतों को एक ऐसा धचका लगा है कि जिससे संभलने में शायद उन्हें दहाइयां लग जाएंगी। रूस और चीन को इस जंग से फायदा हो रहा है, मगर ये जंग अब मशरक़ वुस्ता के बाद एशिया और यूरोप तक भी फैल चुकी है। आज ही वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तज्जिये में लिखा है कि पुतिन के इक़दामात तकाजा कर रहे हैं कि अमेरिका जवाब दे, क्योंकि रूस ईरान की आड़ में यूक्रेन से तवज्जो हटाने में कामयाब हुआ है और साथ ही रूस ईरान से हसास मालूमात भी शेयर कर रहा है कि जिससे ईरान को फायदा और अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। अखबार के मुताबिक रूस ईरान के साथ कुवैत और दुबई में अमरीकी एहदाफ और होटल्स में रिहाइश पजीर अमरीकी फौजियों की ऐसी मालूमात और इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है कि जिसकी मदद से वो उन्हें निशाना बना रहा है। अब तक इसी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए 140 फौजी जख्मी, 7 हलाक और 8 शदीद जख्मी हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी खबर दी है कि इन्हीं हमलों के पेश नजर अब अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में मौजूद अपने सफारतकारों को भी वापस बुलाने के अहकामात तेजी से देना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ईरान से भारी मिकदार में तेल भी दरामद कर रहा है कि जिससे ईरान को माली फायदा पहुंच रहा है। इसके बदले ईरान भी रूस की यूक्रेन के खिलाफ मदद जारी रखे हुए है। जबकि अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदिश के नतीजे में रूसी तेल की मांग दुनिया में बढ़ चुकी है।
اور روس یورپ کو ایک بار پھر تیل کی فراہمی کم نرخوں پر مہیا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اقدام یوکرین جنگ میں روس کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا، جبکہ امریکی اتحادی بھی روس کے قریب ہو جائیں گے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائیں تو اسے غیر معمولی فوجی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ انہیں ابھی تک اس بات کی کوئی حتمی رپورٹ موصول نہیں ہوئی کہ ایران نے واقعی آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کر دی ہیں۔ تاہم اگر ایسا کیا گیا تو تہران کو انہیں فوری طور پر ہٹانا ہوگا۔ البتہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ان رپورٹس کو کنفرم کیا ہے کہ ایران نے واقعی آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، کہ جس کے باعث عالمی تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد 85 ممالک نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ اضافہ ویتنام میں 49.73%، لاؤس میں 32.94%، کمبوڈیا میں 19%، آسٹریلیا میں 18%، امریکہ میں 16.5%، جبکہ جرمنی میں 13% اور چین میں 10.45% سے زیادہ ہوا ہے۔ جبکہ 13 ممالک ایسے ہیں ناظرین کہ جن میں تیل کی قیمت 10% سے زیادہ بڑھی ہے۔ اینڈ آف کورس وی بگن ود پاکستان۔ پاکستان میں تیل کی قیمت میں اضافہ 3% ہوا، کہ جبکہ بھارت کے علاوہ عرب ممالک میں بھی تیل کی قیمت بڑھی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قلت کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ The IEA has agreed to release a record 400 million barrels of crude oil in response to the disruption caused by this conflict۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث جو ہونے والی تیل کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایجنسی نے یہ منظوری دے دی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ IEA ممالک نے ہماری ایجنسی کی تاریخ میں تیل کے ہنگامی ذخائر کی اب تک کی سب سے بڑی ریلیز شروع کرنے کے لیے اتفاق رائے سے ووٹ دیا ہے۔ IEA کا کہنا ہے کہ اس کے تمام 32 رکن ممالک نے اس اقدام کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایران نے دھمکی دی ہے کہ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ ایران نے جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر دی ہے۔ خاتم الانبیاء کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالکرفی کا یہ کہنا ہے کہ تہران کی پالیسی اب پے در پے حملے کی ہوگی۔ ان کی جانب جانے والا کوئی بھی جہاز یا ٹینکر ایک جائز ہدف تصور ہوگا، لیجیٹمیٹ ٹارگٹ۔ ناظرین، گزشتہ 10 دنوں کے دوران صرف 6 مشرق وسطی ممالک کی 25,000 سے زائد ایئر لائن فلائٹس بھی کینسل ہو گئی ہیں، جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ البتہ پاکستان نے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث بحر احمر کے راستے تیل لینا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق PNSC کا جہاز سعودی عرب کی پورٹ پہنچ چکا ہے، کہ جہاں جہاز پاکستان کے لیے 73,000 ٹن خام تیل کے ساتھ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا، جبکہ ایسا ایک اور جہاز شالمار اور وار زون سے تیل لادنے میں کامیاب ہوا ہے، اور یہ جہاز جو ہے وہ فجیرہ سے تیل لادنے کے بعد کراچی روانہ ہوگا۔ پاکستان متبادل راستے اختیار کر رہا ہے، وی آر ایکسپلورنگ ادر آپشنز۔ تو دوسری طرف ایران نے بنگلہ دیش کا تیل آبنائے ہرمز پر نہ روکنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، مگر ساتھ ہی 3 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، which is making the entire situation very very critical and unpredictable۔ یہ واضح رہے کہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے بار بار اس حوالے سے متنبع کیا ہے، لیکن ان کی کوئی بھی وارننگ کو ایران خاطر میں نہیں لا رہا۔ اب ایک جانب ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، دوسری طرف ناظرین امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایرانی تیل کی تجارت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق گزشتہ 6 دنوں کے دوران ایرانی ٹینکرز روزانہ 2.1 ملین بیرل ایرانی تیل برآمد کر رہا ہے، کہ جو فیبروری کے مقابلے میں 2 ملین بیرل زیادہ ہے۔ Right now it is not just Russia. Iran is also fully benefiting from this. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ ایران سے تیل کی برآمد کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری ہے، اور اس دوران مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک تیل کی پیداوار بند کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہ صورتحال آنے والے دنوں میں کسی قیامت خیز لمحے کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند رہتا ہے تو خلیجی ممالک کی تیل کی ایکسپورٹس روزانہ کی بنیاد پر 3.8 ملین بیرل تک کم ہو سکتی ہیں۔ امریکی اخبار لکھ رہا ہے کہ جنگ کے شروع سے اب تک کم از کم 15
तेल बरदार जहाज इस स्ट्रेट से गुजरे हैं और इन जहाजों पर लादा गया तेल चीन और भारत के लिए था। अखबार ने एक चीनी बहरी जहाज से मुतल्लिक लिखा है कि जब वो स्ट्रेट के करीब पहुंचा तो जहाज ने अंग्रेजी जबान में पासदारान इनकलाब के लिए एक पैगाम भी जारी किया कि जिसमें ये कम्युनिकेट किया गया कि ये चीनी बहरी जहाज है कि जो ईरान के लिए कोई खतरा नहीं है। जबकि अखबार को दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर कंपनी मेरसेक ने यह बताया है कि कंपनी के कम से कम 10 जहाज गुज़िश्ता 10 दिनों से खलीज फारिस में फंसे हुए हैं। मशरक़ वस्ता और दुनिया को तेल की बंदिश से होने वाले नुकसान के तनाजुर में एसोसिएटेड प्रेस ने अपने तज्जिए ईरान वॉर बिकम्स अ कॉन्टेस्ट ऑफ हु कैन टेक द मोस्ट पेन में लिखा है कि ईरान जंग अब ये सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है कि जिसमें यह देखना होगा कि कौन कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। इन अ मैटर ऑफ सेइंग हु ब्लिंक्स फर्स्ट, अमरीकी और इजरायली हमलों से ईरान को माली और जानी नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ईरान में सब अच्छा था। ऐसे में देखना यह है कि अमरीका, इजराइल और मशरक़ वस्ता कब तक और कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये माली नुकसान है तो दूसरी जाने मशरक़ वस्ता के अमरीकी इत्तेहादी भी अब अमरीका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इस जंग में हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि हमारा इस जंग में कोई बराह रास्त किरदार भी नहीं था। जबकि रॉयटर्स ने मशरक़ वस्ता ममालिक को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से लिखा है कि अमरीकी जंग का खुमियाजा मशरक़ वस्ता ममालिक क्यों अदा कर रहे हैं, हालांकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात में बेचैनी बहुत ज्यादा पाई जा रही है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा हिट और टारगेट किया गया है, हमलों का निशाना बनाया गया है। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया पर ईरान जंग से मुतल्लिक भी हकायक सामने लाने पर दबाव बढ़ चुका है। अमरीकी सेनेटर्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि सदर ट्रंप अमरीकी वजीर दिफा और वजीर खारजा ऐवान में आकर सेनेट को एतमाद मिले और ये बताएं कि मशरक़ वस्ता में जंग के अहदाफ क्या हैं और मिलिट्री ऑपरेशन से अब तक हासिल क्या हुआ है। ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी सेनेट में इख्तलाफ के साथ साथ अमरीका और इजराइल के दरमियान इख्तलाफ की बातें भी सामने आना लग गई हैं। आज ही अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी है कि अमरीका ने इजराइल को ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से रोक दिया है और यह कहा है कि इजराइल तेहरान शहर के जहां 10 मिलियन लोग बसते हैं इन पर कार्पेट बॉम्बिंग करके आम ईरानियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है और यह किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्सियोस के मुताबिक इस मुतालबे के बावजूद इजराइल ने तेहरान में तेल तंसीबात पर हमले किए जिनकी वजह से ट्रंप इंतजामिया में बेचैनी बढ़ चुकी है। अमरीकी ओहदेदारों ने वेबसाइट को यह बताया है कि ये हमले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तवील बंदिश की वजह बन रहे हैं और इन्हें जल्द अज जल्द रोकना पड़ेगा। तेल की बढ़ती कीमतों के पेश नजर दबाव का शिकार सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका में 50 साल में पहली मर्तबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी कि जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा। नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ये $300 अरब का तारीखी मुआहदा अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डील होगा। सदर ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अमरीकी रियासत जो है वो इसकी बंदरगाह ब्राउन्सविल में बनाएगी। ये नई रिफाइनरी अमेरिका की मुईशत और कौमी सलामती को मजबूत करेगी। सो जस्ट इमेजिन द अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज अंडर। अमरीकी सदर का बयान इस प्रेशर, इस दबाव की अक्कासी कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी सेनेटर्स ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स को गैर तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर चैक शूमर का यह कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। ट्रंप कहते हैं कि स्कूल की बच्चियां ईरानी टॉमाहॉक मिसाइल से मारी गई हैं। ईरान के पास तो टॉमाहॉक मिसाइल है ही नहीं। यह दावा अहमकाना है। उनके जहन में जो बात आती है बगैर सोचे समझे कह डालते हैं। जबकि सेनेटर ब्लू मीथल ने यह कहा है कि मैं इस ब्रीफिंग से बहुत मायूस और गुस्से में हूं। मशरक़ वस्ता में तैनात हमारे बच्चों को शदीद खतरात लाहक हैं और सदर ट्रंप की पॉलिसी गैर वाज़ेह है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका में ये बहस शुरू हो गई है नाजरीन कि कहीं ईरान जंग 21वीं सदी की तीसरी नाकाम जंग तो नहीं बन जाएगी कि जिसमें अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अमेरिका जंग के अहदाफ हासिल करने में नाकाम होगा। इसी हवाले से बात करते हैं ईरान की मारूफ सहाफ़ी वेटरन जर्नलिस्ट मार्जे हाशमी से एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस।
اسی حوالے سے ہمارے ساتھ معروف ایرانین صحافی ویٹرن جرنلسٹ فرام ایران her career spanning over decades, Marze Hashmi موجود ہیں. Marze, thank you very much indeed for joining us. Assalamu alaikum. I hope you're well and safe, and so is your family. Firstly, I would like to know what exactly is the ground situation in Iran as we speak right now, and what areas are being hit the most, what kind of targets are being struck? Walaikum salam. Thank you for having me. Well, nowhere is safe. I can tell you that, particularly because both the regimes, the American and the Zionist regimes, they are targeting heavily populated areas, residential areas. They are also targeting hospitals. We've had dialysis centers hit, many schools that have hit. So we can't say that, well, they're hitting only military targets. If there was a base somewhere and they were just hitting the base, it's one thing, even though it's still an invasion of the country, but they're hitting residential areas. Tehran, for example, the capital, is a city of 10 million people. So very densely populated area that they have been hitting. They have hit historical sites. You know, Iran and its rich history, they've hit UNESCO sites. So nothing is off limits to these regimes. Of course, as we had already seen in Gaza, as we had already seen in Lebanon, and now we're seeing here in Iran. So I was reading some estimates. It's being reported that around 1,300 civilians have been killed and nearly 10,000 civilian sites hit. Now, these are the figures. How accurate are these? Well, I mean, we don't have because it's changing rapidly. I don't have that many as far as the fatalities yet. The wounded, yes, it's very high. And of course, the numbers are continuing to rise because they're hitting every day and in different cities. So unfortunately, and the percentage of those killed and wounded, I think this is the important part, is that they are civilians. They are civilians. How is the Iranian government responding inside the country, Marze? And is the leadership communicating effectively and regularly with the public? It's been quite amazing. Actually, I did a couple of tweets and Instagram posts, stories on that, because it's quite amazing. You know, I'm American, actually. So being here and especially in such a situation, a critical situation, I'm quite impressed, as a matter of fact. For example, the stores, the shelves are filled, and there's not a rush. There's no one, well, we haven't seen like hoarding, running out of not just basic necessities, but all kinds of things that you can still find. Most of the stores and shops are open. There are some, however, that are closed. Some people have decided to travel to what they may perceive as safer areas, but as I said, no one is really sure where the regime is going to hit. So overall, I think everything has been running smoothly, and the nation itself, can I say, it's been unbelievable, because every night we have these unbelievable rallies that are taking place. And as you know, this is the month of Ramadan, and people have just been coming out and showing support for the Islamic establishment. And today, for example, we had a funeral of 4 of the commanders, and unbelievable crowds in Tehran. So this is the reality inside of the country. There has been, can I say, it was a shock to the nation, of course, when the leader of the revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, was killed. It was a major shock. And I think that helped rally everybody around and kind of, ironically, kind of unify the people more so, as opposed to what Israel and the US were expecting. You know, we believe in the blood of the martyrs, and definitely that particular martyr. It has been amazing. I've been in Iran many years now, and I haven't seen this kind of not just unity, but enthusiasm, that it's one nation, we're going to stick together, and we're going to defeat
those who have done this. There is a very strong will to continue this and to make them pay this time around, because we know last year, excuse me, back in June, that war took 12 days. Now today is the 12th day, or was the 12th day of this particular war, and people are saying no ceasefire. They have crossed too many red lines, and they must pay. So this does not happen every 6 months or annually. They must put a stop to this. And which gets me to another point I would like to ask you, Marze, because, you know, it seems that President Donald Trump did offer an off-ramp to Iran, and Iran has categorically kind of refused it, rejected it. And now the US military is claiming that it's destroyed around 16 Iranian mine-laying vessels near the Strait of Hormuz, accusing Iran of threatening global shipping. Is Iran deliberately using oil routes as leverage in this conflict? Well, let me say, any threat comes from the United States and the Israeli regime. Iran had said throughout this time, all the threats that they continually said that they were going to strike, they were going to hit Iran, and Iran said, do not do that. This time around, it will not be like last time. You may decide to start this war, but it will be Iran who decides to end it. And about the global shipping, I'm sorry that if Iran doesn't have security, then those American bases are not going to be secure. It's American interests that have been hit. It's Zionist interests that have been hit. It's not that the Strait of Hormuz is closed, but Iran, yes, is choosing who can go through. And it's said the enemies, those who have attacked the country, no, they're not going to be allowed to just continue business as usual. I understand that, but has there been an internal discussion on where to stop, or how much destruction is Iran hoping to achieve in order to, you know, fend off the attackers, or to give them a clear message never to repeat this again? I mean, Iran is also threatening to attack Google, Amazon, Microsoft as legitimate targets as of right now. So is Iran declaring an all-out war against the US companies, either they are tech, non-military, either which way? And what is that cutoff point? I mean, I'm trying to understand who decides ceasefire and at what point. The US declared a war on Iran. Iran has responded with retaliatory strikes. However, Iran is expanding its attacks. The reason why, because you just cannot come into a country and kill civilians, kill the leader of the country who so many people admired and loved, and killed so many civilians, killing over 150 little girls in elementary school. It's the Iranian people who actually have told their leaders, who told their president, there is no way that we're going to stop this time around. What's the end point? Well, the end point is actually for the United States to get out of this region, to stop surrounding Iran with American bases, to stop threatening the security of the people of this region. We cannot be surrounded by American bases because they are a hostile entity. I mean, that's just the reality. No, but this is a longer-term goal, right, Marze? Let me just say this. Would the United States allow Iran to put bases in Canada or Mexico? No, absolutely not. And I understand what you're saying, but in order to achieve what you are saying, is that also reflective in the Iranian regime and the government's policy right now? Because this is a longer-term target, the fact that you want to see American bases removed from the Gulf. I mean, this is a longer target. So are we looking at a 6-month or a 1 year or even further an escalation into this conflict? We really don't know. I mean, we don't know how long this is going to take, but I can tell you that Iran prepared for the long haul to begin with. How do you define long haul? It was the United States that thought it would be over in 48 hours. Yes. So with that miscalculation, that's how they entered this war. Iran wants to make sure that its people are safe, that this nation is safe. And that can only be accomplished by controlling both regimes. So whatever it takes, the main thing is that the Iranian people are willing to go all the way. No, absolutely. And I'll get to more of that, Marze. Every day. But in order to keep the Iranian people safe, is there
what is the target? Is there a definitive target that the regime has in mind where it's going to stop, Well, or what it needs to the achieve? long run is for the absolute safety of the Islamic Republic. You're saying that the Iranian people won't be safe like this. And yes, unfortunately, people are being killed every day Yes, but because of at these what point regimes. do you However, say if we that do that's not stand ensured, up, that no matter safety is? how long it takes, this would continue and even get worse. So unfortunately, these regimes only understand force. That's the language that they understand, and that's the language that they're getting definitely right now from Iran. Okay, so with your new leadership, Mujtaba Khamenei now officially taking the reins, how is he exactly? There are some reports that he is injured, he isn't well, he hasn't made a public appearance yet. Well, of course, because of these regimes, and as you know, the Zionist regime, and along with their Americans, are saying that whoever was going to be appointed the leader of the revolution, they would immediately target. So security is one issue, strategic moves are another. He will make a speech at the time that he needs to. But yes, he is in control. And of course, right now we're in the middle of the battle. And he's at the reins and directing it. And Marse, do let me know, because, regarding his health, because are these reports confirmed that he has been injured? And also, Iranian president has said that the military commanders are conducting operations as they were told to do so, and they are now acting independently. Can we say that the Iranian president is... It's set up that the leader of the revolution is in control. The ultimate orders come from him, especially in a situation like this with war. The powers of each individual has been defined, whether we're talking about the president or the head of the parliament, but the leader, especially in times like this, he's in charge and, of course, in close contact with the military commanders. So things are running as they should. I think that the world has definitely been surprised, and especially those who started the war has definitely been surprised that they thought that they would kill the leader of the revolution, and their shock and awe technique initiated, and then the whole country would fall apart. And obviously what we're seeing is a very powerful Iran that is not only dealing with this war between the Israeli regime and the U.S. regime. Let's be realistic. It's not the U.S. by itself. It's all of the Western hegemonic front. It's the NATO countries supporting them. And Iran, the country that has been sanctioned for more than 4 decades, fighting them all and doing quite well. And yes, at the same time, we are losing people, but the Iranian nation, we're willing to sacrifice that as long as we make sure that we deter the enemies for as much longer than the last time than what they did. So it's very interesting because it seems that there is inordinate kind of unity among the Iranian public right now with what you're saying. Are the people rallying behind this government fully, or is there actually some criticism of the leadership as well? The people, with regards to being worried about a full-scale invasion or a regime collapse, how are these things being felt or discussed within Iran? I wish I could show you some of the videos of the rallies and the people. And the people want the United States and the Zionist regime actually for a land invasion. They are waiting for that because we know that they are inept. They are inept at fighting militaries and on the ground. They will bomb in the middle of the night. They will bomb civilian areas. They will kill women and children, as we've seen for 2.5 years in Gaza. They do not want to get on the ground and go in against another military. That's not their forte. They can't. So yeah, Iran says, bring it on, actually. If that's what you want to do, that would be the biggest mistake that you have ever imagined. So that's the mentality. And I'm not just saying this for myself, because I go around and I talk to people to assess the overall feeling. Prior to all of this, we know that we had the major economic situation back in January. We know the attempted coup that the West actually implemented against Iran. And we know that it was very difficult because we were going through economic problems. There were legitimate strikes and protests that were hijacked.
So there was that divide to a certain degree. But I can tell you, with what they have done, they have united this nation like I've never seen. It's amazing. So it's not the victory or simply anything to ensure an end to the bombing. The people do not want negotiations. They want victory right now. And do the people believe Iran can sustain retaliation against the USA and Israel in the long term? What role is the Revolutionary Guard playing in directing the war effort right now? Well, of course, the Revolutionary Guard is playing an essential role, and all of the military in general is playing that role. But of course, the IRGC is playing the leading role. And the people believe that, this is a nation. This is a Muslim nation. It is the month of Ramadan. It's the day today is the martyrdom anniversary of the first Shia Imam Ali ibn Abi Talib. This is a nation that knows it has to sacrifice. It's willing to sacrifice for what it's right. So it knows that it has been paying a price for more than 4.5 decades for standing for what it believes in, and for wanting to control its own path, for standing up for the oppressed. Which other nation has stood more than the Islamic Republic of Iran, for example, for the Palestinians? Why has it taken that on? Because it's what's right. Because it is what's right. Someone has to stand for the oppressed. It's our responsibility Islamically. And last question, Marze. The CIA wants to arm Kurds to help spark uprising and civil unrest in Iran. Of course they do. Yeah, of course they do. They have tried everything that they could 47 years since the existence of the Islamic Republic. And I'm sure they will do their best to arm whichever groups they could. But Iran has faced this before. You have to understand, Iran from the very beginning, after the victory of the revolution, started facing the plots of the United States and others. And there were secessionist movements that they were pushing at that time. And Iran was the military was quite new, and they didn't have weapons, and they were able to shut it down then. So just know that 47 years later, they can definitely shut it down. This is a nation of strong will. I don't know if you've seen some of the videos that have come out, the people at these rallies, all of a sudden bombs are going off. And then people just stand and start chanting even louder. This is the nation that believes in, this is the nation, the Shia nation believing in the way of Imam Hussein, that we would rather give our lives as martyrs than to live with the lack of dignity and to be humiliated. That's the actual belief of the majority of the people in this nation. And that's what sustains us and gives us strength, because of our belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and definitely believing that we're on the right path, and we would rather give our lives and first then allow ourselves to be humiliated. Thank you so much, Marze Hashmi. हमारे साथ मौजूद थी सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट हैं ईरान की. उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में दिहाइयों पे मुहित सहाफ़त में मैंने कभी इस तरह कौम को मुत्तहिद होते नहीं देखा जितनी कौम आज मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो गई है इन हमलों के बाद. और अब कौम इरानियन लीडरशिप से कह रही है कि रुकना नहीं है, इनको मज़ाक चखाना है, इनको एक वंस एंड फॉर ऑल इनको ख़त्म करके छोड़ना है. बड़ा वाज़े एक नज़रिया पाया जा रहा है ईरान के अंदर बकौल मार्ज़े हाशमी, और वो ये कह रही हैं कि अब कोई भी जगह पूरे ईरान के तूलो अर्ज़ में महफूज नहीं रही. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं. अब जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमलों में हर हदफ को निशाना बना रहा है, लेकिन नाजरीन एक ऐसा ईरानी जजीरा है कि जिसे ऑफन पर्ल ऑफ ईरान करार दिया जाता है, इस पर अभी तक हमला नहीं किया गया और इसी को लेकर आलमी मीडिया में तज्जिये जारी हैं. अल जजीरा ने ईरान के खार्ग जजीरे को ईरानी ऑयल पावर की अलामत करार दिया है और अमरीकी और यूरोपियन मीडिया में अब भी इस पर कब्जा करने की कोशिशों से मुतल्लिक लिखा जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि ईरान मुल्क की तकरीबन तमाम खाम तेल की बरामद के मरकज इस जजीरे पर अगर हमला कर दिया गया तो तनाज़े में बड़ी शिद्दत आ जाएगी. अमेरिका और इजराइल ने अब तक जजीरे के गिर्द मोहतात अंदाज अपनाया हुआ है, लेकिन अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों के हवाले से बताया है कि खार्ग पर कब्जे की ऑप्शन
موجود ہے۔ جے پی مورگن کے مطابق یہ جزیرہ جو ایرانی سرزمین سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع ہے، تقریباً 90% ایران کی خام تیل کی برآمدات دیکھتا ہے۔ جے پی مورگن کا یہ ماننا ہے کہ براہ راست حملہ فوری طور پر ایران کی خام تیل کی برآمدات پر بڑا اثر کرے گا، بہت بڑا حصہ روک دے گا ایران کی خام تیل کی پروڈکشن پر، کہ جس کے ابنائے ہرمز میں شدید جوابی کارروائی کا امکان مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے سینئر فیلو نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ ایرانی توانائی کے وسائل اب تک متاثر نہیں ہوئے اور جزیرے کو نشانہ بنانا ایک بہت خطرناک اقدام ہوگا۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 جہازوں پر حملوں کے بعد ناظرین یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں سیز فائر کا تاحال کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ ایندھن اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ، ممکنہ غذائی قلت، عدم استحکام اور امریکی فیڈرل ریزرو سمیت دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے لیے مشکل فیصلے اب تک اس جنگ سے پیدا ہونے والے بحران کے فوری اثرات ہیں۔ اکانومسٹ ایٹ دا پیٹرسن انسٹیٹیوٹ آف مورس آبسٹریل کے مطابق یہ وہی ڈرانا خواب ہے کہ جس نے برسوں تک امریکہ کو ایران پر حملے سے روکے رکھا تھا، تاہم اب یہ صورتحال حقیقت بن چکی ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش اور تہران پر حملے سے قبل عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے کم تھی، لیکن چند ہی دنوں میں یہ $120 تک پہنچ گئی۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت ایک ہی ہفتے میں $3.48 فی گیلن ہو چکی ہے۔ یورپ اور ایشیا میں یہ اثرات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، کیونکہ یہ خطے مشرق وسطیٰ کے تیل پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی بندش روزانہ 20 ملین بیرل تیل کو عالمی منڈی میں پہنچانے سے روک رہی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اتنی اضافی پیداوار موجود نہیں ہے کہ جو اس خلا کو، اس ویکیوم کو پر کر سکے۔ آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کے مطابق تیل کی قیمت میں 10% اضافہ عالمی مہنگائی میں 0.4% اضافے اور عالمی پیداوار میں 0.2% کمی کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں عالمی معیشت پہ پے در پے کئی جنگوں اور معاشی پالیسیوں کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یوکرین جنگ اور 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے تجارتی ٹیرف اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ جنگ کے معاشی اثرات نے دنیا کو واضح طور پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ توانائی درآمد کرنے والے خطے جیسے یورپ، جاپان، بھارت، چین، جنوبی کوریا، تائیوان شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی صورتحال خاص طور پر سنگین ہے، کیونکہ ملک اپنی توانائی کا 40% درآمد کرتا ہے اور قطر سے آنے والی LNG کی بندش نے پاکستان کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ توانائی پر اضافی اخراجات اور ساتھ مسلسل بڑھتی مہنگائی کے باعث اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھانے پر بھی مجبور ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹرمپس وار ود ایران چینج دا ورلڈ ان اے ویک میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ شروع ہونے والی نئی جنگ کہ جسے انہوں نے ایک مختصر مداخلت قرار دیا تھا، اب ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ عالمی سیکیورٹی اور معیشت کے لیے حالیہ دہائیوں کے کسی بھی دوسرے تنازع سے بڑا جھٹکا ثابت ہو رہی ہے۔ خلیج فارس سے تیل کی ترسیل میں رکاوٹ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ماہرین 1970 کی دہائی جسے سٹیگفلیشن کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، جہاں ترقی رک جاتی ہے اور قیمتیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بحران کا دوسرا پہلو خلیجی ممالک کا بدلتا ہوا منظرنامہ ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اور قبرص جیسے ممالک جو خود کو محفوظ تصور کرتے تھے اب ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کے ہوائی اڈوں پر حملوں نے ان ممالک کے سیف ہیون ہونے کے تشخص کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ سے پیدا ہونے والے بحران کا تیسرا پہلو عالمی طاقتوں پر ہونے والے اثرات ہیں۔ سستے تیل تک رسائی ختم ہونے اور مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ متاثر ہونے سے چین کی معیشت خطرے میں ہے، جبکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے روس کو بے تحاشا فائدہ ہو رہا ہے کہ جس سے اسے یوکرین جنگ کے لیے بھی مزید فنڈز مل رہے ہیں، جبکہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس جنگ کا کوئی واضح اختتام نظر نہیں آ رہا کہ جس سے یورپ میں مہاجرین کا ایک نیا سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ تاہم جنگ کے اس بحران نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے سیاسی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یہ تنازع آئندہ مڈ ٹرم الیکشنز اور موسم گرما میں ہونے والے ورلڈ کپ فٹ بال پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں جس کا عنوان ٹرمپس ایران وار ول افیکٹ مور دین جسٹ گیس پرائسز میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ چھیڑی ہوئی یہ جنگ عالمی تجارت اور امریکیوں کے معیار زندگی اسٹینڈرڈ آف لائف کو شدید متاثر کرے گی۔ ہم ایران کے ساتھ جنگ کے دوسرے ہفتے میں ہیں۔ ہم ایران اور خلیج خطے میں ہزاروں ہلاکتیں اور امریکی فوجی اموات دیکھ چکے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ قیمتیں بڑھیں گی، لیکن بقول ان کے یہ ایک ایسی فوجی کامیابی ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ حیران کن طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کو صرف تیل کے بحران کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، در حقیقت یہ بندش ایک عالمی معاشی بحران کا سبب بن چکی ہے، کیونکہ دنیا کا 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے کہ جو تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف پیٹرول پمپس تک محدود نہیں رہیں گے۔ کھاد کی تیاری کا خام مال اسی رستے سے گزرتا ہے۔ فصلوں کی بوائی کا وقت ہے، لہٰذا خوراک کی قیمتیں بڑھیں گی کہ جو ایک سنگین بحران کو جنم دیں گی، جبکہ صنعتی خام مال، سلفر اور تانبا اس کی جو سپلائی ہے تمام تر وہ چین سے اسی چینل سے بھی گزرتی ہے۔ خام مال کی عدم فراہمی سے بیٹریز اور ٹرانسفارمرز بنانا بھی مشکل ترین ہو جائے گا۔ یہ بحران بھی اپنی نوعیت کا شدید ترین بحران ہوگا۔ تاہم الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ان کا اولین جو پرائیورٹی ہے، جو ترجیح ہے، وہ سٹاک مارکیٹ کو گرنے سے بچانا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران ان کے متضاد بیانات نے مارکیٹ میں غیر یقینی اور انسرٹنٹی کی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کو معاشی اشاریوں کی اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ایران کے خلاف حملے تیز ہوئے تو عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ گئی اور سٹاک مارکیٹ گرنے لگی۔ تاہم جیسے ہی صدر ٹرمپ نے اس جنگ کو ایک مختصر دورہ قرار دے کر ختم ہونے کا اشارہ دیا، انڈیسیکس میں فوری اضافہ دیکھنے میں آیا اور تیل کی قیمتیں $90 سے نیچے آ گئیں۔ لیکن پھر چند ہی گھنٹوں بعد جب صدر ٹرمپ نے اپنا بیان بدل لیا اور پھر یہ کہا کہ جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شیڈیول سے آگے چل رہی ہے، کہ جس نے سرمایہ کاروں کو دوبارہ تشویش میں ڈال دیا۔ This yo-yo situation and this uncertainty is very, very complicated and it is impacting all global markets۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔